You notice that this maxilla is hypoplastic, so his speech is reasonably good. You see his tongue is restricted. Done surgery on his upper jaw, cheekbone, chin, angle, lower jaw. Also, we've got a positive overjet even now by about 2 mm. बिल्कुल ही चेंज हो गया है। सुनील सर को बहुत थैंक यू और उनकी टीम को बहुत थैंक यू कहना चाहते हैं कि हम लोगों को ऐसे सर्जरी मिला करके। Alright, so here we have a patient with us who's a known case of cleft lip, cleft palate, treated elsewhere when he was young. Now he came to us with several problems. Initially his main complaint was a collapsed nostril, but when you examine him carefully, you will notice that, you notice that this maxilla is hypoplastic. That means the growth of the maxilla is not what it should be. It is retruded. It has not grown to its normal potential. That is because this is known as cleft maxillary hypoplasia, where the intrinsic growth of the maxilla is restricted in such patients due to repeated surgeries, more scarring, and so we plan to do a bi-jaw surgery for him and not an AMD in this case. Why? Because his speech is reasonably good. आप 1 से 10 तक बोलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So his speech is reasonably good. AMD would be another option. AMD was proposed, but the patient cannot stay with us for a long time. Also, they cannot come back for bunk removal. And considering all these factors, patient factors as well as the speech is good, we are going to proceed with a bi-jaw surgery, a LIFO1 and a BSSO setback. The mock surgery has already been done, splints have been prepared, and we are going to revise the lip. Also he has, zaban upar karo. Yeah, you see his tongue is restricted, tongue movement is restricted. This is called as ankyloglossia or a tongue tie. So we're going to release, do a frenectomy, that is the lingual frenum you could see which is holding it. We're going to release that and do a tongue tie release. So multiple procedures have been planned, a bi-jaw with a tongue tie release with lip revision. After we've done a face makeover surgery, we've done surgery on his upper jaw, cheekbone, chin, angle, lower jaw, also the base of the nose. Little bit of lip surgery done on the inside, so it was like a lip revision with muscle and mucosal work, not skin work. It wasn't possible this time because of the too much bony work that we've done. So you can see the improvement. Got corrected his underbite, fixed his projection. Here class 3 as we call it, maxillary hyperplasia, underbite, mandible very long, different angles. Alright, so this is day 7 following a Bimax surgery, and this patient is a known case of cleft lip and palate. He was treated elsewhere, but when he came to us, he had
या साइड में देखो, आप जब आए थे हमारे पास, आपका जो ऊपर का जबड़ा था वो एकदम पीछे था। इसको हम बोलते हैं क्लेफ्ट मैक्सिलरी हाइपोप्लेसिया, मतलब जो अपर जॉ है ना उसका ग्रोथ आगे हुआ नहीं। पहले हमने आपको बोला था कि हम AMD करेंगे डिस्ट्रैक्शन, पर फिर this patient was not able to stay with us for a long time and they wanted to return home as early as possible. Keeping his speech in consideration, we went for a Bimax in this case. Usually we do an AMD, especially in patients who have hampered speech. That is because AMD is a procedure which does not improve the speech as such, but it does not hamper the existing speech. Now, another thing why we did a orthognathic is because the advancement needed was about 6 mm. We did not need a greater advancement. AMD would be the better choice in case the advancement required was more than 6 mm. So it is quite a safe surgical procedure in this case because we are not expecting much relapse. Also, we've got a positive overjet even now by about 2 mm, which is good. And you see these braces that we have placed here, that is because the patient was on elastics. We can guide the upper jaw forward. He's having a class 1 occlusion now. Bite karo. His molar relation is also perfect. You have no issue. आपका जो प्रोफाइल है वो अभी एकदम, मतलब आप नए इंसान लग रहे हो। इसका जो दांत है वो बहुत ज्यादा आगे था, ऊपर वाले को पूरा पीछे करके क्रॉस करता था। अभी ये बहुत बढ़िया, बिल्कुल नए आदमी की तरह दिख रहा है। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। बिल्कुल ही चेंज हो गया है। हम लोग ट्रीटमेंट से बहुत ज़्यादा खुश हैं। हम लोग जैसा सोचे थे उससे लाख गुना बेहतर हुआ है। आपको कैसा लगा, आप बताओ। ये आपके पास, आप बोलो। बहुत अच्छा है। मेरे पापा को भी बहुत अच्छा लगेगा। अभी धीरे धीरे आपका मुंह खुलेगा। 1-2 दिन में आप सॉफ्ट डाइट स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अपर आपको बहुत ख्याल रखना है 1 महीने तक, क्योंकि हमने अपर जॉ लोअर जॉ दोनों किया है। कुछ भी हार्ड एप्पल जैसा नहीं खाना है आपको। सॉफ्ट डाइट, चावल वगैरह खा सकते हो, दलिया, चावल, डोसा, इडली वगैरह आपको मन करे तो। आप जो भी खाते हो वो सब सही है, बस रोटी पराठा वो सब अवॉइड करना। कुछ भी चबाने वाला चीज़ 1 महीने के लिए अवॉइड करना। 1 महीने के बाद आप सब खा सकते हो, ठीक है। अभी हम आपका स्कैन लेंगे, हम स्कैन में एक्सप्लेन करेंगे आपको क्या करना, ओके। बिल्कुल ही चेंज हो गया है। सब लोग बोल रहे हैं कि एकदम पहचान में ही नहीं आ रहा है, इतना सुंदर लग रहा है। आपने तो सर से भी अच्छे से एकदम बोला। अभी अपर जॉ लोअर जॉ सब एक्सप्लेन करने में एकदम आप मास्टर हो गए। ये मेरा भाई है। ये जब पैदा हुआ था तब इसका क्लेफ्ट लिप था, क्लेफ्ट पैलेट था। फिर धीरे धीरे इसका सर्जरी शुरू हुआ। 3, 4, 5 सर्जरी हुआ, बाद में जाके 6, 7 सर्जरी हुआ, बट रिजल्ट्स बिल्कुल वैसा ही था। थोड़ा बहुत सुधार आया, बट इस ट्रीटमेंट से वो सेटिस्फाइड नहीं था। फिर हम लोगों को सुनील सर के बारे में पता चला, वहाँ पे हम लोग गए, इंस्टा के थ्रू हम लोगों को पता चला। फिर हम लोग वहाँ से, बिहार से हम लोग यहाँ पे आए। फिर हम लोगों का ट्रीटमेंट यहाँ पे शुरू हुआ। स्टार्टिंग में सबसे पहले इसका जो लोअर जॉ था वो काफ़ी ज़्यादा आगे था और अपर का जो जॉ है वो काफ़ी ज़्यादा पीछे था। फिर जाके इसका सर्जरी प्लान हुआ और सर ने बहुत अच्छे से हम लोगों को बताया कि कैसे स्टेप बाय स्टेप सर्जरी होगा। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हाँ, हम लोगों को कराना है। फिर हम लोगों ने सर्जरी कराया। अब जाके इसका जो प्रोफाइल है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो गया है। ये लोअर जॉ जो काफ़ी ज़्यादा आगे था वो बिल्कुल स्ट्रेट हो गया है। अपर जॉ जो काफ़ी पीछे था वो एकदम स्ट्रेट लाइन में आ गया है और ये बहुत अच्छा दिख रहा है। हम लोगों को यहाँ के बारे में नहीं पता था, हम लोग इंस्टा के थ्रू यहाँ पे आए। फिर हम लोग यहाँ पे बात किए सर से, सर ने हम लोगों को सब कुछ बताया। फिर हम लोगों ने ट्रीटमेंट कराया
और ट्रीटमेंट का जो भी रिजल्ट आया जैसा हम लोगों ने सोचा था उससे बहुत 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 बेहतर आया। हम लोग सुनील सर को बहुत थैंक यू और उनकी टीम को बहुत थैंक यू कहना चाहते हैं कि हम लोगों को ऐसा सर्जरी मिला करके, और बहुत बढ़िया से यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छे से किया गया। सुनील सर, मधु मैम और उनकी टीम बहुत अच्छे से हम लोगों का केयर किया। हम लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छे से रखा गया और बहुत अच्छे से केयर किया गया। उनकी टीम, यहाँ के लोग, सब लोग बहुत बेहतर तरीके से हम लोगों से बिहेव किया और सब लोग बहुत बहुत अच्छे हैं। मैं सर को, मधु मैम को और यहाँ की सारी टीम को बहुत बहुत थैंक यू दिल से कहना चाहती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सर।